Sustainable development is the pathway to the future we want for all. It offers a framework to generate economic growth, achieve social justice, exercise environmental stewardship, and strengthen the governance. By saying this quote, I welcome everybody present here today for the National Legislatures Conference organized by the Student Council under the able guidance of Director of Student Affairs, Dr. Mahesh Thorve sir, and blessings of our honorable dignitaries on the dais, Honorable Executive President Shri Rahul V. Karaj sir, Honorable Vice Chancellor Dr. R.M. Chitnis sir, Convener of NLC Dr. Sunil Dhade sir, Pro Vice Chancellors Milind Pandey sir and Tapan Panda sir, Honorable Registrar Professor Ganesh Pokle sir, Dean of Student Affairs Dr. Mrudula Kulkarni ma'am, and the authorities. The NLC work has begun a month ago, where the Student Council, the academic leaders, along with Dr. Mahesh Thorve sir, have been conducting several meetings to discuss about the flow and work structure and functioning and coordination of NLC. A preparatory meet for the same was conducted on Saturday, 15th April at Vivekanand Hall, where we received a great response from you all, in spite it being a holiday. Seeing the response of the students through the various emails sent to you all and your presence for the meetings gives the Student Council a motivation and assures us that you would stand strong with us to conduct the very first edition of NLC successfully. Seeing the volume of NLC, our Executive President sir is going to address you here today. Without any further ado, let's begin the meet. It has been a tradition in MIT where we begin any program or event with our Vishwa Shanti prayer. I request the technical team to please play the Vishwa Shanti prayer, and I request everybody to rise in their seats for the Vishwa Shanti prayer. प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you. I request everybody to kindly take their seats. I would now like to welcome our Honorable Registrar, Professor Ganesh Pokle sir, for the opening remarks. Very good morning. Very good morning to the dais and this energetic audience here. I first of all welcome our Executive President sir, Vice Chancellor sir, and the team of National Legislators Conference, Rashtriya Vidhayak Sammelan. I welcome all of you and congratulate all of you
to be chosen to be the volunteers for this NLC and all other in student committee capacities. So welcome and congratulations to all of you. I hope everybody is settled. So let me give you a very brief that why are we gathered here today. We all know that we are going to experience something very historic in the month of June, which is Rashtriya Vidhayak Sammelan. We all gathered here as a continuation. We already had few interactions, meetings, in a capacity of a small committees, in a capacity of specific task allotted. Here we gathered today because now this family has gone big. You can see the houseful auditorium. Student volunteers are now shortlisted. They are groomed, informed about their contribution. So all of us are going to be the change makers and contributors to this NLC. And that's why we are here. So I think first we should give round of applause for all of us to be part of this historic moment. Great. So when the management from this side meets to the energy of your this side, going to have a very great event. So the context of today's thing is how we have a NLC coming up. There are certain teams made with the faculty mentors. We also have student volunteers part of respective teams. You are all aware that which team you are contributing to. There are frequent meetings, communications been set through the teams, through the faculty mentors committee heads. And then we should now hear to understand a very core gist of this NLC. We should prepare ourselves to be rightly informed and rightly involved so that our contribution will effectively help this event to be successful. Question is why we want student volunteers to be part of it. Why MIT is part of it. If you all remember, in various occasions we have heard our Executive President Rahul sir saying education, universities not only mean for education, they are also mean for experiences. Experience brings lot of learning to us. Experience beyond classroom learning bring lot of enrichment to us, and we believe in a very holistic development of our students, converting students to the professionals. Now saying this thought, that's why we really want our students to be part of this NLC. This event gives you a experience of team building, experience of interaction with the other members of the stalwarts of the society, experience of organizing something. We are working on a lot of technology platform during this. We are working on communication strategies. These things would have not been possible to learn in a given curriculum of the classroom. So this something is one of its kind experience, and here we are trying to combine education and experience together through this NLC. So this is going to be a big opportunity. I would like all of to be very patient in listening all the dignitaries on dais today. We are supposed to seek our role, our contribution to this NLC, whether it's a committee volunteer, whether it's a licensing officer, or whether it's any other role given to us. We shall be very vocal, we shall be very active, proactive in spreading these messages. These are very selected students invited here today. You selected students, chosen students, should be very proactive in communicating, receiving the right message here today and communicating it to all our peers, our student friends outside. We are a pool of 20,000 plus students. So it becomes our responsibility to receive a right message, be very rightly involved, proactively involved, and contribute one step to many steps to make this NLC a very grand success. I welcome all of you on board of NLC as volunteers and every other capacity. Student is the energy to this event. So please be attentive and receive well out of it. For any during query, you always can reach out to your team leaders post this event, right? If required, you can also take the notes, what has been said from here. This session will also be, our Executive President's address will also be live telecasted to all our students' friends already sitting at various places. So this is something very important coming to you. I want you to be very attentive and very patient. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for the opening remarks. I would now request our Honorable Vice Chancellor, Dr. R.M. Chutnis, sir, to address us. Good morning and namaskar to all of you. Honorable Executive President Rahul Karat, sir, all the dignitaries on the dais,
all the faculty members, and dear students. I'm going to take 5.5 minutes to share with you that how you guys are one of the most fortunate, those who are getting chance in working in NLC. What is in for yourself, what is in for country called India or Bharat. You are aware that in 1947, so many people sacrificed their lives and we got freedom. And very unfortunately, post 1947, this country was divided into two countries and 20 lakh people died. In the history of humankind, in the history of mankind, this is the largest massacre which has happened between ourselves, our brotherhood. Who is responsible for this? And then came democracy, which has 4 parts: judiciary, the justice and law; media, which tells you how the things are happening around you; bureaucracy, the IAS, IPS officers; and the politicos, those are MLA, MPs, MLCs. MLAs are at the state level, MLCs are at the state level, whereas MPs are from Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is the upper house, Lok Sabha is the lower house. We have 544 in Lok Sabha and another few hundred in Rajya Sabha. Put together, we have nearly 1,000 MPs, but 4,500 plus MLAs in this country. And that belongs to 28 states of this country and 8 union territories put together. And these are the people who jointly contribute to the development of country called Bharat. But they don't know each other's best practices. And here is an attempt by Rahul Karatji that all the 4,500 member of Legislative Assembly will come together in Mumbai, in Bandra, in Geo Center. If not all, then at least 50%. And if not very senior, at least the young guys, those who are young, they have long haul inning to be played in the next few decades, will be trained, will be exposed, and will be exchanging the best practices. Someone who is in Northeast, say Arunachal or Nagaland or Tripura or Manipur or Silchar or Assam or say like Guwahati or Shillong, near Myanmar border, you may not be knowing these names, and they will be people who will be coming to foreign land called as India because they don't know this part of India. They don't know their part of it. Now here, what is the take for you? Try to understand that you will get good education, good degree, good nokri, good chokri, good children, and good money, and good foreign tours. But then, is your surrounding safe for you, which was there many years back? Or there could be so many problems like casteism, criminalization, or environment sustainability is at toss. Lot of issues which are around you like traffic jam or so on and so forth, inflation. How you will save your Bharat? Is your country going ahead in terms of your currency? When I was in college, our professors told that, you know guys, today $1 is equal to 8 rupees, and when you become young and when you start working, it is your responsibility that $1 will be equivalent to 1 rupee. We failed. And today $1 is equal to 82 rupees. Here is my appeal, here is my challenge to all of you, that how many years you will take, you will work hard for a country called Bharat, thereby your home currency, 1 rupee, will become to $1. And if you can take that challenge, you will see that you will be real Vishwaguru. Monetary strength is one of the most popular strength in this particular age where we are into. One India we are talking. We are talking about so many MLAs coming together where you get exposed to them. So your advantage is you get exposed to the leadership traits. You develop kind of a leadership in you. Point number 2, the entire exposure, the canvas goes much beyond the degree or the diploma or post-graduation which you are doing here. Point number 3, you are trying to contribute to your motherland called Bharat, which so many people in India, 12 crore plus students are taking education, only 500 of you are getting directly.
Why this is important? Because for the first time in the 75 years democratic history of India, this particular event is happening. Way back, the first democracy of this world, which is America, it happened in 1975. Rahul Karad sir, who is an engineer, and then he is MBA from Cardiff, UK, and then he has done MBA or the OPM program, costliest program on this planet in Harvard Business School. He came across with Kennedy School of Government during his days on Harvard, and then he created this MIT School of Government, that particular school which will actually appeal you, motivate you, that educated people in this country can contribute directly or indirectly to the democracy, strengthening the fabric of democracy, then only our country will go up. Not because of so many engineers or so many MBAs, our country will go up. Are we there to strengthen democratic fabric of the country? Yes, you are there. You are more intelligent than our generation. You are more exposed than us because of the global university, and you have more kind of global opportunities than our particular generation. But are you going in the right direction? There is basic thing taught in computers that garbage in is garbage out. Somewhere, if your gigabytes in terms of memory and RAM is much better than us, then why this generation is not going in the success or towards the right path? Because there is something which is coming into that particular memory which is garbaged also, which these suppliers are sending. And then I'm asked to close early, but I'm just trying to make this particular event in a different perspective. This is not an event, this is a complete movement in this India. 100 years down the line, India will write history. Then this today's date will be very, very important, that so many 500 boys and girls came and they changed the fate of Bharat. Tell me one thing, Rahul Karad sir, who is, they say in English, born with a silver spoon. Forget about silver, with a golden spoon. Forget about golden, with a platinum spoon. He was born as the head of this. He owns 4 universities. Why he should take this? He could have pretty well relaxed and use his time for so many other things which could be entertaining him or, growing the business. But my country, my Bharat, and strengthening the fabric of Bharat, that is what motivated him. He motivated all of us. All of us are motivating you, and try to see this is an opportunity to contribute to the motherland, like so many people during 1947 or earlier to that contributed for the best of the best freedom we got in this country called Bharat. And if you are into that, everything will be protected. There is a saying in Urdu, फानूक बन के जिसकी खिदमत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन ऊपर वाला करे. Our fabric, our democracy flame, which is created and then it is strengthened by MIT School of Government. That particular MIT School of Government is doing this particular event or the movement. It's kick-started. It is now in your hand. You take it further for next so many years to come. यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए हमें चलना पड़ता है. इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है. हम लड़ेंगे हमारी किस्मत से और विल टेक द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल. Thank you, sir, for the address. Today we have with us our life guru Sanjay Upadhyay sir, and without his remarks, this session would be incomplete. I would request Sanjay Upadhyay sir to address the gathering. नमस्कार. संजय उपाध्याय सर देखे जाए तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है. Ideally, he is one of the chief mentors of MIT-WPU University. He has been working with our honorable founder president sir, Dr. Vishwanath Karad sir, since long back. और NLC के साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं राहुल सर के साथ, और जो NLC के थॉट प्रोसेस है उसमें की रोल संजय उपाध्याय सर प्ले करते हैं. मन करा प्रसन्न और गप्पाष्टक जैसे उनके शो पूरे महाराष्ट्र में और देश भर मशहूर है. Let's welcome Dr. Sanjay Upadhyay sir with big round of applause.
नमस्कार। नमस्कार। इस तरह की कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है, संकल्पना है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट राहुल कराड़ जी की। मेरी आपसे विनती है कि जोर से राहुल कराड़ सर का अभिनंदन करेंगे हम। अभी जो आपने अभिनंदन किया उसे वो मोनो अभिनंदन है, हमें स्टीरियोफोनिक चाहिए। स्टीरियोफोनिक मतलब गले से भी आवाज आनी चाहिए, ऐसे ये। इसे चिल्लाना नहीं कहते, इसे कहते हैं स्वर मुहूर्त। स्वर मुहूर्त, स्वर तो मतलब ऑस्पिशियस मोमेंट, वो गले से भी निकलती है, उसे स्वर मुहूर्त कहा गया है। क्योंकि जब आप इकट्ठा जोर से घोषणा देते हो तब आपका जो ब्रीदिंग है वो एक ही लाइन में आएगा सबका, और जैसे ब्रीदिंग एक साथ होता है एक साथ ताकत तैयार होती है। इसलिए वो हर हर, हाँ, ऐसे हमारे म्यूनसिपल कर्मचारी है वो जो पाइप उठाते हैं या केबल उठाते हैं हैवी, तो जोर लगा के हैयो इस तरह से चिल्लाते हैं। उसकी वजह एक ही है कि सबका मिलके एक ही स्थान पर शक्ति का इकट्ठा होना, और इसलिए मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि इस तरह से हम अभिनंदन करेंगे। सवाल यह है कि ये क्यों करना है। एजुकेशन में जो पिछले 40 साल से काम करने वाली संस्था है, वो इस तरह से भारतीय छात्र संसद हो, सरपंच परिषद हो, एजुकेशन का डोमेन छोड़ के ये क्यों करना है। ये जब आपको पता चल जाएगा तो ही आप दिल लगा के इसमें काम करोगे। ये भी एक वर्कशॉप है ट्रेनिंग का, और मैं तो ऐसे देखता हूँ हमारे इतिहास में भी ऐसे ही हुआ है। विश्वामित्र गए राजा दशरथ के पास, अगर विश्वामित्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उन्होंने श्री राम नाम के एक विद्यार्थी को अपने हाथ में लिया ट्रेनिंग के लिए और आगे बढ़े। सांदीपनी ऋषि ने भी वही किया, श्री कृष्ण को हाथ में लिया। आर्य चाणक्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो चंद्रगुप्त को बुलाकर उसके माध्यम से क्रांति तैयार की। यही काम MIT कर रही है। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करती है कि नहीं मालूम है, MIT ये काम ज़रूर करती है कि केवल एजुकेशन ही नहीं तो समाज में बाहर जो भी हो रहा है, देश में जो भी हो रहा है, 1947 टू AK-47, क्या समझे पॉलिटिकल जर्नी, 1947 टू AK-47, ये बदलनी है। दिल एक मंदिर से दिल तो पागल है, ये कल्चरल जर्नी भी बदलनी है। प्यार करने का तरीका भी कैसा सैंक्टिटी के साथ था, पवित्र था। दिल एक मंदिर नाम के पिक्चर निकलते थे, अब दिल तो पागल है, ये मेंटल हॉस्पिटल में जाने लगे। सवाल ये है कौन करेगा ये। जैसे अगली जनरेशन आती है अपने माता पिता के संस्कार से बाहर निकल गई है, क्योंकि एजुकेशन मातृभाषा में नहीं है, एजुकेशन अंग्रेजी में है। तो इंग्लिश मीडियम है तो मातृभाषा भी मीडियम है, मातृभाषा का स्टैंडर्ड भी मीडियम हो गया। तो इंग्लिश पढ़कर आप कार ले सकते हो, इंग्लिश में पढ़कर संस्कार नहीं ले सकते। कार ले सकोगे लेकिन संस्कार नहीं ले पाओगे। ये जो फंक्शन है ये संस्कार का फंक्शन है। ये सिर्फ MIT की एक्टिविटी नहीं है, इसमें संस्कार की बात है। कितने तरीके के आमदार आपको मिलेंगे वहाँ पर। पढ़े लिखा आमदार होगा, अनपढ़ आमदार होगा, लेकिन इंटेलिजेंट होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपको नज़दीक दिखाई देंगे, आप उनके साथ मिल सकते हो, बात कर सकते हो। ये भी एक संस्कार है। अगर पूरे राष्ट्र का विचार करना है तो जो युवा पीढ़ी है उसको पॉलिटिक्स के बारे में आस्था लगनी चाहिए।
तो ही कुछ बदलाव हो सकता है। और पूरी दुनिया एकजुट हो रही है कि हिंदुस्तान के जो जवान लोग हैं उनको कैसे फैब्रिकेट करें, उनके कैरेक्टर्स कैसे फैब्रिकेट करें, उनको कितने दूर ले जाएं पॉलिटिक्स से, उतना अच्छा हो जाएगा। MIT की कोशिश ये है कि आ जाओ पॉलिटिक्स में, आ जाओ, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो और अच्छा होगा। आपकी उम्र के लोग आएंगे तो अच्छा होने वाला है, सच बोल रहा हूं मैं। मैंने भी एक बार पॉलिटिकल डायट शेयर किया है शिवसेना का, लेकिन वहां पे हिम्मत जुटनी चाहिए, एक्सपीरियंस है। शिवसेना का 10वां मेळावा था शिवाजी पार्क पे, स्टूडेंट था मैं कॉलेज में, और बाला साहेब ठाकरे का पहला स्पीच मेरा, ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने छोड़ी नहीं वो अपॉर्चुनिटी, दिल लगा के गया वहाँ पे और एक मराठी कविता पेश की मैंने। आप आ जाओ, दिल से आ जाओ। जो मराठी कविता पेश की उसकी सुरुवात थी, आणखी एका तरीसुद्धा आमच्या इथे सारं काही छान आहे, आमचा देश महान आहे, अंगावरती पांढरे कपडे, मनात काळा भाव आहे, स्वार्थ म्हणजेच परमार्थ असा कुरघोडीचा डाव आहे, ऐसी कविता थी मेरी। चोहीकडून आमच्या देशात घुसखोरीला वाट आहे, कुटुंब नियोजन करून सुद्धा लोकसंख्या दाट आहे, पृथ्वीवरती दूरवर कोठे एक सद्दाम हुसेन आहे, आमच्या इथे प्रत्येकाचंच नाव मुद्दाम हुसेन आहे, राजकारणाच्या प्रत्येक गल्लीत एक तरी कुत्रा आहे, चावेल्या कल्पनेनंच सामान्य माणूस भित्र आहे, आत्महत्या केली तर काळं कुत्र विचारणार नाही, आत्महत्या केली तर काळं कुत्र विचारणार नाही, जिवंत राहिला तर कसे जगता हे पांढरं कुत्र विचारणार नाही, माणूस फक्त नावापुरता बाकी जनावरांचीच खाण आहे, तरी सुद्धा आमच्या इथे सारं काही छान है, आमचा देश मान है, ऐसी कविता मैं म्हटली। बच्चे लोग आपको नहीं उस पर आगे बताता हूँ, इतना डर लग रहा था क्योंकि सफ़ेद कपड़े के बारे में मैं ऐसे बोल रहा था, पांढरा कुतरा और ऐसे सब, और पीछे बैठे हुए सब सफ़ेद कपड़े में थे, शिवसेना प्रमुख के साथ सब सफ़ेद कपड़े में थे। दादर में एक प्रोग्राम था, अगर शिवसेना प्रमुख को गुस्सा अगर आ गया तो दादर स्मशान भूमि पीछे ही थी, मैं वापस विले पार्ले में नहीं आ सकता था। सवाल यह है, हिम्मत की दाद देनी होती है, और वैसी दाद मिली मुझे। आज भी यूट्यूब पे ये कविता यूट्यूब पे है, 1994 10वां मेळावा शिवसेना, ऐसा सर्च डालो, 1994 न रे, हाँ आपको मिलेगा, बड़े बाल वाला संजय उपाध्याय। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मेरी खुद की तारीफ के लिए नहीं, निकाल फोटो निकाल रहे हो कि शूटिंग करो करो ये भी ट्रेनिंग है, नहीं तो यहाँ से कैमरा है और मैं यहाँ देख रहा हूँ, फायदा क्या है तैयार हो जाओ, वर्सेटाइल बन जाओ। ये जो कॉन्फ्रेंस है उसमें वर्सेटाइल बनने का ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, टाइम पे खाना मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, क्वांटम बहुत बड़ा है, आमदार लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग सोच है हमारे यहाँ पे, तो ये आपको वापस ऐसे रेडीमेड प्रोग्राम नहीं मिलेगा। जो आप तय भी करोगे जाने के लिए तो मौका मिलने वाला नहीं। मेरी आपसे विनती है और हाथ जोड़ के विनती है कि डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। पब्लिक के सामने आना है, वो भी पॉलिटिशियंस के सामने। पॉलिटिशियंस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो क्या हो रहा है, वो कितना कितना प्लानिंग रहता होगा उन लोगों का। वो जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, उनका स्पीच परसों देख रहा था, अच्छा लगा। उनका सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आपने पहले क्या किया, हाउ डिड यू फिक्स द करप्शन, ऐसे पूछा। तो उन्होंने कहा वी फर्स्ट चेंज द पार्टी इन पावर। क्या बढ़िया आंसर है, हमने पावर में पार्टी बदल दी पहले भ्रष्टाचार निकालने के लिए। ये अच्छा है बुरा है, कांग्रेस अच्छी है बीजेपी अच्छी है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, ये भारतीय राजनीति है, और भारतीय राजनीति एक ही राजनीति ऐसी है जहाँ डेमोक्रेसी इन फेथ, दिस इज द ओनली कंट्री। बिल्कुल अभिमान रखो अपने देश का। डेमोक्रेसी इन फेथ, डेमोक्रेसी इन गवर्नेंस बहुत सारे देशों में होगी, डेमोक्रेसी इन फेथ। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का दर्शन नहीं लोगे तो आप काफर नहीं बनते, शनिचर को मारुति का दर्शन नहीं लोगे तो आप काफर नहीं बनते। मैं भगवान को मानता भी नहीं, फिर भी आपको ऋषि पदवी दी जाएगी चारवाक के नाम पे। ये डेमोक्रेसी इन फेथ और किसी देश में नहीं है, क्योंकि इस संस्कृति को संस्थापक नहीं है।
ध्यान में रखो, पॉलिटिकली कैसे चलता होगा ये भारत का पूरा हिस्सा, और ये जानने का इतना अच्छा मौका। इट इज़ नॉट, भारतीय छात्र संसद की एनाटोमी अलग है और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी एनाटोमी अलग है। समझने की कोशिश करो, दिल से अंदर आ जाओ, मन लगा के अंदर आ जाओ, ओनरशिप ले लो, कॉन्फ्रेंस की ओनरशिप ले लो। किसी ने कहा मैंडेटरी किया है इसलिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुंह टेढ़ा करके, ऐसे मत करो। ये भी सीखने का तरीका है। उस दिन स्टाइल मारोगे जब आपको आपका पोता आपको पूछेगा कि ग्रैंडपा आपने क्या किया आप कॉलेज में थे, तो तब बोलना हमें पूरे आमदार इकट्ठा लाए थे हम लोगों ने। ऐसे स्टाइल मारोगे बाद में, कौन यार, ये टाइम, ये जो टाइम आप 3-3 घंटा बाहर करते हो ना बर्बाद, कि नहीं करते हो? हाँ, कोल्ड कॉफी पीते पीते हॉट देखते हो ना, तो आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, थोड़ा इस तरफ भी समय बता दो, पॉलिटिक्स में आ जाओ, पॉलिटिक्स की बात समझ लो। वो टाइम तो वेस्ट ही गया है, पॉलिटिक्स पे प्यार करो। राजनीति नाम की एक लड़की है, उस पे प्यार करो, आ जाओ अंदर। आज जरूरत है देश को। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे आके मिलो। राजनीति में क्या करना है, कैसे भाषण कैसे देना है, फोटोग्राफर को कैसे पोज देनी है, सब सीखना है। वर्सेटाइल बन जाओ, तब मज़ा आएगा। खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर मौका मिले तो वापस आ जाऊँगा, लेकिन इतना ध्यान में रखो, थैंक्स टू राहुल कराड़ सर टू स्टार्ट BCS हो, सरपंच परिषद हो, सब कितने जन होंगे जिनके मन में ऐसा लगता है कि ये कुछ भी आइडिया लाते हैं और करते हैं, ऐसे अधिकार है इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे जो डेप्थ है, उस कल्पना के पीछे जो डेप्थ है, वो समझने की कोशिश करो। वो हमें समझना है। राहुल सर इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरी मोमेंट, इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन आवर पार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आइडिया ही हैज़ इन हिज माइंड। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे को समझाने जाते थे कि राज्य क्यों स्थापन करना है तो बात नहीं, तानाजी मालुसरे ने खुद समझना है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों किया जा रहा है। छत्रपति नहीं गए हर एक सैनिक के पास जाके, मावड़ा के पास जाके कि हिंदवी स्वराज्य क्यों स्थापन करना है। ये दिल से दिल मिलना है, हार्ट टू हार्ट होना है। ये हृदय से ते हृदय खाते ले, तभी बात समझ में आओगी। इसलिए वहाँ से दिमाग को निकाल दो, इंस्टिंक्ट को अंदर लाओ और फिर समझ लो ये मेरा काम है, ये मेरी कॉन्फ्रेंस है और मैं इसमें काम करने वाला हूँ। जो छोटे छोटे सपोर्ट्स है वही इम्पोर्टेंट है, और वो आप सब बैठे हो हमारे सामने। So come on, cheer up. अगर किसी को दूर से बुलाना है तो तैयारी करो, जोर से चिल्लाने की, ये करने की, इनसे बजाय ऐसे करना सीख लो। करेक्ट, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए ये कब मारनी है, उसे संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आप दिल से अंदर आ जाओ, देखो क्या मज़ा आएगा ये कॉन्फ्रेंस करने में। और फिर MIT का भी नाम बड़ा होगा, आपकी ज़िंदगी में सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। अच्छा, वो सर्टिफिकेट आप घर में लगा के रखो कि हम भी पॉलिटिक्स में गए नहीं तो प्राइम मिनिस्टर होते थे। और क्या कहूँ, आखिर में इतना ही कह सकता हूँ कि जो कल्पना है राहुल सर की, उस कल्पना के साथ दोस्ती करो। ये जो आइडिया है ये इम्पोर्टेंट है। वो छोटा स्पार्क रहता है, चिंगारी रहती है छोटी सी, लेकिन उसका यज्ञ करना है, उसे माउंटेन फायर नहीं करना है, आग नहीं लगानी है, हमें यज्ञ प्रज्वलित करना है। आइडिया के माध्यम से यज्ञ प्रज्वलित करना है, मतलब फ्रेमवर्क में रहना है उसको। उस आग को फ्रेमवर्क में बांध के फिर उसकी पूजा करोगे तो अपने आप प्रसाद आ जाएगा अग्नि देवता के माध्यम से। और ये आज आवश्यक है, हमारे देश को आवश्यक है, हमारी पूरी देश को आज आवश्यक है। इस लोकशाही में, इस डेमोक्रेसी में इस तरह से आपका सहभागी होना, ये आपकी नेशनल ड्यूटी है, ऐसा मुझे लगता है। उस नेशनल ड्यूटी पे प्यार करो, थोड़े टाइम के लिए ब्यूटी बाजू में रखो, नेशनल ड्यूटी और ब्यूटी में ड्यूटी को पकड़ो और ये काम करो।
आज नहीं समझ जाओगे, लेकिन 10 साल के बाद कहो कि संजय सर कह रहे थे वो सही था, हमने इतना ट्रेनिंग पाया 4 दिन में, ऐसा वापस नहीं मिला हमको। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर एक बार जोरदार ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। Thank you, Sanjay sir. Whenever sir has stood over here and addressed the gathering, we have always seen a great response from the crowd, and today this was the same situation. Thank you, sir. Before we move ahead, I would like to mention this. Seeing the response of the students, the crowd is already full, the auditorium is full over here. We had to make arrangement for the students in the classrooms beside, and live streaming is going on regarding this meeting right now over there. Thank you for the response from your students. Thank you for being here. To move forward, I would like to invite Honorable Pro Vice Chancellor of MIT-WPU, Dr. Milind Pandey sir, to address us. So very good morning to every one of you. Good morning. So let me tell you first thing. So we are in the MIT, right? Spelling of MIT is MIT. What? Listen. If you remove I from MIT, what remains is empty. So we all are here to put our I into this MIT, in this platform. What do you mean by I? I is your inspiration, your instinct, your innovation, your initiation. Professor Rahul Karad has given us a best platform, and let me tell you one more thing. MIT is always taking the path-breaking initiative. The first engineering college started in 1983, path-breaking initiative. The courses like polymer, petroleum, design, MIT School of Government, first time in the country. Bharatiya Chhatra Sansad, National Teacher Congress, and my friends, list goes on. What is important here? We must contribute to the very, very own initiative called National Legislators Council. One of its own kind, first time happening, not in the country, in the world. First time, all the parties, सब पार्टी के नेता लोग इकट्ठे आ रहे हैं. We will be there to participate into it. मुझे कुछ बात कहनी है in this conference, in these 4 days. So many workshops planned. काफ़ी कुछ workshops हो रहे हैं, interactions हो रहे हैं, but there is a special program, आज़ादी के 75 वर्ष, और उसमें हम लोग we will be demonstrating the innovativeness of the country. More than 150 startups, with the support of every one of you, we will be displaying the booths. Social startups, grassroots startups, and we divided into the 10 categories: health, education, agriculture, energy, environment, transportation. So these are the various startups. Let me tell you, the Modi ji has said the IT plus IT is equal to IT. बड़ा चमत्कारिक लगता है. Why he is saying 2 plus 2 is equal to 2? But when he said the innovative technologies plus Indian talent is equal to India tomorrow. The innovative technologies and the Indian talent, if you would like to build the India tomorrow, the innovative technologies has to be imbibed into the mindset of the students, and this MIT World Peace University is doing it. We want all our MIT-WPU students, they should be professionally sound, socially responsible, and spiritually elevated. These are the 3 important dimensions when you are taking admissions to this mighty MIT. I repeat, professionally sound, socially responsible, and spiritually elevated. That's why these all yoga, meditation, prayers. Socially responsible, this is the word.
So I'm telling the socially responsible. I said how our MIT-WPU students should be the innovation in head, compassion in heart, and passion in belly. My friends, when we said the compassion in heart and passion in belly, we will be here to resolve the problems in the society. And that's why the innovation in head is required. That's why the so many programs we are doing about the ride, about the hackathon, and about so many things are going on. And this is nothing but the degree plus program which Rahul Karat sir has started. Let me focus majorly on innovation. What those innovation we will be showcasing, the innovation in health, innovation in healthcare technologies, innovation in agriculture. One crop, one drop. Grassroots innovations, Dr. Mashelkar sir will be guiding us. Padma Shri Anil Gupta sir will be guiding us, and this complete demonstration of the innovation projects, innovation thoughts, and you will be witnessing all those. These are the takeaways for you from this NLC. मैं कुछ और भी बात करना चाहूँगा सर. This NLC has to give us a lot. This NLC, we are not in this MIT-WPU, when we are talking of the degree plus and so many things, we are not just training your minds, we are transforming your hearts, and this is the one of the program which will give the complete transformation. खाली हम लोगों को सर को साथ देना है. मुझे एक हमारे कल्बे रिजवी की एक पोएम याद आती है सर. वो ऐसा बोलते हैं कि बस मिट्टी में मिला दे मुझे, मिट्टी में मिला दे मुझे, मिट्टी में मिला दे मुझे, जुदा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता. बस तू मेरी आवाज में अपनी आवाज मिला दे और फिर देख इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता. So we need to contribute for the cause, my friends. We need to contribute, we need to build up, and as I said, the transformation will be happening with participation into these, the innovation, the startups, this complete ecosystem. This will give you, whatever the ideas will be coming into your mind, how you will be taking it from mind to market, whatever the ideas you will be writing onto the paper to product, and whatever the ideas coming, how you will be putting it into the prototype. You can see the various startups across India, across the states, and those startups initiated by the students, the university. Universalization of the mind is the university, and these university startups will really gives you the different dimensions how you can contribute socially. So with this, मैं इतना ही बोलूँगा कि वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो. वक्त कम है, जितना दम है उतना लगा दो. कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो, कुछ लोगों को आप जगा दो. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Especially for the NLC, we have with us convener of NLC, Sunil Dhade sir with us. I would now request him to come on the dais and address the gathering. Good morning, namaskar, and I must say that this is a special day in my life for one reason, that I have been coming to MIT now for almost 2 months, but today is the first day I am feeling youth. All of you, the breath of fresh air in you refreshes me. And when I look at what youth means,
I am reminded of a definition of the word youth by none other than late Bharat Ratna Baba Amte. And he defined youth like this. He said, youth is he who carries a young head on young shoulders. What does that mean? Youth is he who enters into areas not chartered. Youth is he who does things which are not done before. Youth is he, I would say youth is he and also she first, who think and dream of things no one dreamt of before. And let me say that National Legislators Conference, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, एक ऐसा सपना है जो पहले कभी देखा नहीं गया, और इसी सपने के साथ आकृष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ, भारत सरकार में 34 वर्ष बिताकर सचिव पद पर निवृत्त होने के बाद। कम से कम 25 देशों में 50 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशंस में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है, और उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि जो यहाँ पर होने जा रहा है, it has simply no parallel. We are all going to write history, and this history is going to be totally different. And why MIT? Simple answer, ऐसी चीज़ें MIT नहीं करेगा तो और कौन करेगा? भारतीय छात्र संसद MIT ने की, सरपंच परिषद MIT ने की, विमेंस एम्पावरमेंट MIT। तो सभी विधायकों को एक अराजकीय व्यासपीठ पर लाने का काम MIT छोड़कर और कौन कर सकता है? और ऐसा काम अगर करना है तो उसमें आप लोगों के सिवा और किसकी भूमिका अहम हो सकती है? किसी की नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आपकी भूमिका क्या है? आपको आह्वान किया जा रहा है, यू आर बीइंग इनवाइटेड टू जॉइन दिस, बट डू व्हाट? बी अ पार्ट ऑफ मेकिंग समथिंग विच would have memories etched in gold for many years to come. And which are those memories? Those memories include chronicling innovative practices by legislators, documenting great practices and products in states, be witness to people representing lakhs of people interacting together, talking of development, talking of future and whatnot. Most important, showcasing before them innovation. We are going to have an exhibition which will showcase startups, innovations, which should become perhaps the buzzwords of tomorrow, the engines of our growth. In fact, मुझे आप लोगों से जलन होती है। जलन इसलिए होती है कि अगर हमारी जवानी में ऐसे मौके मिलते तो हम कहाँ पहुँच गए होते। तो आइए इन मौक़ों का फ़ायदा लीजिए। इसमें जो आपको सीखने को मिलेगा उसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है। Please experience that. I will end with answer to one question which may be in the minds of all of you. The question is the expectation from us, is the task before us easy, difficult, somewhat difficult, very difficult? And my answer is very difficult. क्योंकि इसमें आपके कम्युनिकेशन की कसौटी है, आपके नॉलेज की कसौटी है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स की कसौटी है,
आपके इंटरैक्शन की कसौटी है और बहुत सारी कसौटियां हैं। लेकिन फिर भी क्या ये करना चाहिए? इसका जवाब मैं उन कुछ काव्य पंक्तियों में दूंगा जो पंक्तियां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी संसद में दोहराई थी। वो पंक्तियां इस प्रकार है: सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ही गोज ऑन, इधर उधर कई मंजिल है, चल सको तो चलो, बने बनाए है साचे, जो ढल सको तो चलो। फाइनली, द पोएम इज लॉन्ग, आई विल ओनली हैव वन मोर स्टैंजा। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो, बहल सको तो चलो, आइए हम सब साथ चलते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for addressing us. I would now request the technical team to play the NLC film. Bharat, the world's largest democracy, celebrating 75 years. With this grand celebration, we bring you the first ever National Legislators Conference, Bharat, a unique coming together of more than 50 national and regional parties under one umbrella. The Indian Parliament, the temple of the world's largest democracy, is the source of inspiration for this conference. Under the patronage of four honourable former speakers of the Lok Sabha, Srimati Sumitra Mahajanji, Dr. Meena Kumarji, Shri Manohar Joshiji and Shri Shivraj Patilji. For the first time in the history of the country, more than 4,000 elected representatives from all the states and union territories will converge on an independent and apolitical platform. With more than 80 brainstorming sessions, this conclave deliberating topics like enhancing legislative performance, new best practices for good governance, economic progress based on social inclusion, and being effective and sensitized public representatives. In this forum, we will find solutions to chronic problems. A platform where different political parties will come together to make Bharat stronger. Where the youth will get inspired to enter politics. A new dawn of good governance, leadership, democracy, education, and world peace. आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है, उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है. The patrons and advisors of this grand mission have already met at Pune, New Delhi, and Mumbai to discuss the details of this iconic conference. The seed was planted in 2005 with the setting up of the MIT School of Government, the aim of which was to give formal political training to the youth. In 2011, MIT School of Government organized the largest youth parliament, Bharatiya Chhatra Sansad, where thousands of young leaders from different parts of the country came together to give shape to their political dreams and ambitions. This was followed in 2017 by the National Women's Parliament aimed at helping women enter legislative bodies. In 2018, the Rashtriya Sarpanch Sansad came into being in order to strengthen grassroots democracy in the villages. The National Legislators Conference Bharat is born from these visionary milestones of over 20 years to give in every hand the tools of nation building. Come, be a part of this festival of democracy, the first ever National Legislators Conference Bharat, which will be organized on 15th, 16th, 17th June 2023 at Geo World Convention Center, Mumbai. Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. The respected dais, the Vice Chancellor, Professor Dhade, Sanjay Upadhyay ji, we heard he just left, Professor Kamtekar, Professor Pandey,
Madam Kulkarni, our registrar, Mr. Setu from the social media team, and of course our Tanvi and Om, Viraj, Abhijit and Arya, a very symbolic representation of all of you here, I mean to say the student body of our MIT, prestigious MIT World Peace University. Let me welcome you for this very important gathering, the first such meeting for identifying the best volunteers for this very prestigious first National Legislators Conference. From my bottom of heart, I welcome some of the teachers and all other leaders I see here. So I'm very glad and extremely happy to hear some of the expressions by our own people. लेकिन मुझे अभी एक थोड़ी देर पहले जब संजय उपाध्याय जी ने कुछ बात बोली तो मुझे एक किस्सा याद आया कि करीबन 20 साल पहले जब पहली बार हमारे आदरणीय फाउंडर he was traveling from Mumbai to London for the first time, some 25 years or little old story he shared me once. And the gentleman sitting next to him was a British gentleman, and while traveling, of course, he had some chat, and it was his first trip to London. And when the flight was landing at the Heathrow airport, so somehow through some conversation, some natural dialogue, Dr. Karat said, "You ruled us long back for over 150 years." And some conversation was going on. So further, the very British fellow reacting to our founder, and some dialogue was again, and he said, "Mr. Karat, please correct yourself. It is not the Great Britain which ruled your country. It is Oxford and Cambridge ruled your country and the world." So why I am telling you this story, my dear friends, that at Professor Sanjay Upadhyay ji said, and some other members also said, ki why this very effort of gathering all these lawmakers? We have 4,500 MLAs for the first time they are gathering. And this very journey in the year 2005, the MIT School of Government, the first school of the country to develop the future politicians, and Bharatiya Chhatra Sansad, the National Women's Parliament, National Teachers Congress, and so many other initiatives. The World Peace Dome, our very founder, the way the laboratory of the world peace he could create. If you go to Oxford, Cambridge, the best of the best institutions of the world, you will find some such monuments there, which all the time educate the society and build their pride that you are here to do something very unique, different, and that's how I think this very National Legislators Conference from MIT World Peace University, from MIT School of Government is very, very meaningful. So you all should be aware. And with that purpose, we felt that instead of just sending some formal communication from the Registrar Office and Vice Chancellor's Office, let us have one dialogue with each one of you. After seeing this little film, you all must have understood. This is not just an event, my dear friends. I was told that in all the classrooms, many other students are also observing this very important, this volunteers identification, this exercise meeting. But this very effort was initiated way back in the year 2005 when we established the country's first school to develop the future politicians, which has given the birth to all these ideas of Bharatiya Chhatra Sansad and many such last over 20 years now. And last 3 years before the COVID itself, I shared this idea to Prithviraj Chavanji, the congressman here in Maharashtra, the Venkaiah Naidu ji, the former Vice President of India, and some other leaders. They said, "Mr. Karat, our democracy, we have some 50 political parties and maybe more than that. This is not American, which is a very great work what they have done in the, we all know that they are the greatest democracy, the whole world follow them and we try to learn from each other all the time." But I remember the words of Shri Prithviraj ji and Venkaiah ji and some other leaders. They said कि आपकी जैसी संस्था ने न्यूट्रल, जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं, अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे आके ये एफर्ट करती है, तभी जाके ये एफर्ट शायद सफल होने में कामयाबी होगी सरकार की तरफ से। बहुत सारे, बिकॉज वी हैव, हमारा राजू रजवाड़ों का देश था, आप सब लोग जानते हैं। स्वतंत्रता से पहले हम इतनी सारी विरासतों को इकट्ठा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, फिर हमारा भारत का स्वतंत्रता मिली, ब्रिटिशर्स चले गए और 75 साल के बाद हम यहाँ पे आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण आपने यहाँ पे सुना।
इस कल्पना के बारे में उनके साथ भी रूबरू हो चुकी है और बाकी भी लीडरशिप के साथ चर्चा हो चुकी है कि ये कैसे महत्वपूर्ण है, और उन्होंने इसके लिए बहुत सराहना करके बोला कि आप इस विषय में पुढाकार लीजिए और इंडिपेंडेंटली आप इसको आगे बढ़ाइए। ये पहली बार ऐसा होगा कि तमिलनाडु का एमएलए महाराष्ट्र के एमएलए के साथ चर्चा करेगा, महाराष्ट्र का एमएलए केरला के एमएलए और भी राजस्थान के एमएलए, सभी एक दूसरे के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। और एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात, हमने सभी एमएलएज को बोला है कि अपने अपने क्षेत्र की जल और मट्टी, आपकी मिठाइयाँ इसमें लेके आइए। आप सब लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि स्कूल ऑफ लॉ हो, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हो, स्कूल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, सो ये स्कूल्स तो डायरेक्टली इसके साथ लिंक्ड है, इस विषय के साथ, नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस के साथ। लेकिन मैं चाहूँगा कि इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो और बाकी भी सभी फैकल्टीज़ के स्टूडेंट्स, आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि एक्टिव सिटीजनशिप की बात इस संस्था ने हमेशा प्रमोट की है, हमारे फाउंडर साहब ने प्रमोट की है। इसीलिए वर्ल्ड पीस, ये वर्ड भी अपना बड़ा अनोखा लगता है कि एक यूनिवर्सिटी को जो टेक्नोलॉजी की बात और प्रोफेशनल एजुकेशन को सिखाने की बात करती है, उसका नाम है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, जो हमारे फाउंडर साहब ने इसके बारे में प्रमोट किया। और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर भी उनको कि आपका और पीस का क्या संबंध है, आप तो एजुकेशन देते हैं। तो अल्टीमेटली सोसाइटी में जो भी ऑर्डर हमें तैयार करना है, कोई बेंटले कार होता है या कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, एयर कंडीशनिंग यहाँ पे थोड़ा कम है, मैं जानता हूँ ऊपर, तो ये सब हमें कंफर्ट देने के लिए ये पीस, इट इज़ ऑल अबाउट पीस, इनर पीस, आउटसाइड पीस। सो उसी तरीके से गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी की बात पिछले 20 सालों से MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और इन सब विषयों के माध्यम से हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग बड़ी गंभीरता से इस पूरे विषय की तरफ देखें, जो स्टूडेंट्स इसमें कमिटेडली, बिकॉज ये कॉन्फ्रेंस एक वर्ल्ड के सामने एक मॉडल बनने जा रहा है जिसमें 2,500-3 हज़ार MLAs का लगभग आने की संभावना है। ऑलरेडी 700 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और करीबन 20-22 विधानसभाओं ने इसको कंट्रीब्यूशन किया। ये खाली हमारी, ये भी मैं बताना चाहूँगा, हमारी खाली अकेले की शिक्षण संस्था, इसके पूरे जो कामकाज का जिम्मेदारी हमारा अकेले का नहीं है। इसमें बहुत सारी सरकारें, कोई कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है, कोई खाने दे रहा है, कोई बाकी भी जिम्मेदारियां दे रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार, गोवा सरकार, तमिलनाडु सरकार। तो इस तरीके से सभी विधानसभाएं और सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां इसमें बांट के ली है। और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो हम इसको कन्वेन कर रहे हैं, लीड ले रहे हैं, ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से इस कॉन्फ्रेंस की तरफ देखने की ज़रूरत है और यही कारण है, सभी लोगों को मैं बताऊं, ये कॉन्फ्रेंस हमारे ट्रस्टी मीटिंग में भी चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे फाउंडर साहब की इच्छा थी कि वो वर्ल्ड पीस डोम में क्यों ना करे, इतना बड़ा सुंदर डोम बना है। लेकिन भावना ये थी कि बहुत सारे नेताओं ने मुंबई की फ़्लाइट की कनेक्टिविटी की बात हो और इस विषय को एक न्यूट्रलिटी के माध्यम से समाज के सामने जाने के लिए, इसको भारत का, ये खाली MIT है और हमारा नहीं, ये पूरे भारत की एक ऐसी एक पहली कॉन्फ्रेंस ये होने जा रही है, ये मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के आप सब लोग हिस्सेदार, भागीदार, इसको बनाने में बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग सोशल मीडिया के टीम्स होंगे, इसमें एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप सब लोग आपका इंटरेस्ट इसमें नोट करें कि इस एरिया में मैं काम करना चाहता हूँ या मैं काम करना चाहती हूँ। तो और बीच में अगले 2 महीने में खाली एक बार नहीं, जो भी 1000-1200 सिलेक्टेड चोजन स्टूडेंट्स इसमें वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा अलग अलग एरिया में कि आपको किस तरीके से, बिकॉज कोई भी ये नहीं कि अरे ये छोटे बच्चे हैं, चलो गलतियाँ हो गई, तो वहाँ पे हमें गलती करने का कोई भी वहाँ पे इस तरीके का गैप नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये प्रोग्राम हमारे कॉलेज के अलग अलग फेस्ट होते हैं और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन वहाँ का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे गलती हुई तो हम एक पेरेंट की तरह, सभी टीचर्स आपको शायद, बट इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से हमें कोई भी चूक वहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं। एक यूनाइटेड नेशंस में जिस तरीके का माहौल होता है उस तरीके का वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट, सो ऐसे स्टैचूज़ भी वहाँ पे बनाए गए हैं कि जो डेमोक्रेसी के वर्ल्ड के प्रमोटर्स है। ये मेरे हाथ में यहाँ पे ट्राइस्ट विद द पीपल द प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में जितने भी करीबन 150 के लगभग जो देशों में जहाँ पे लोकतंत्र है उनके ये प्रीएम्बल्स है, ये पूरे इकट्ठा किए हैं। मैं चाहूँगा वाइस चांसलर से कि ये बाद में ये बच्चों को हमने गिफ्ट करना चाहिए
कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है. देयर इज़ वन फ्रेमवर्क व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का बनते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी के चेयरमैनशिप में, तो कैसे हमारा प्रीएम्बल, तो ये बिलोंगिंगनेस कि आई कैन बी ए इंजीनियर और अ डॉक्टर और अ साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, लिबरल आर्ट, फाइन आर्ट, वॉट एवर एरिया यू वर्क इन. इस संस्था की अपेक्षा आप सब लोगों से ये है कि यू फाइनली क्रिएट अ हार्मनी, यू क्रिएट wealth for yourself, but you are you have to create a difference in the society. That is the expectation from this institution. There are so many other institutions working so well, but we have our own ethos and our value system. 10:45 we have some every day this particular prayer. Why this prayer for? You all should ask. And trust me, some students may feel कि अरे ये क्या, ये 5-6 मिनट रुकना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 10-20 साल जब आप 30-40 साल के जब होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस संस्था का वर्ल्ड पीस नाम क्यों था और उसने मेरे जीवन में कितना बड़ा रोल, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है. MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हो या नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस हो, इन सब चीज़ों ने आपके जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले किया है, इसका आपको अंदाज़ा आएगा. और बिकॉज हम सब लोग भारत का लॉ मेकर्स को इकट्ठा करके क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा. मैं एक ही उदाहरण देना चाहूँगा कि तमिलनाडु कर्नाटका से कोई है यहाँ पे? तमिलनाडु कर्नाटका में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ 70 के दशक में. महाराष्ट्र में 83 में ये लॉ आया. इतना समय क्यों बीता? 12 साल तमिलनाडु में ये रोल आया कि प्राइवेट इंजीनियरिंग के मेडिकल कॉलेजेस निकल सकते हैं. आज इंजीनियरिंग का ये सबसे महत्वपूर्ण हमारी संस्था यहाँ मानी जाती है. और ऐसे बाकी बहुत सारे एरियाज़ में ये लॉ मेकिंग में हमारे राज्यों में जो डिफरेंस है, कुछ अच्छे हैदराबाद में हम गए और भी किसी स्टेट में गए, सिटी में गए, वहाँ पे जाने के बाद देखने के बाद हमें पता चलता है कि यार ये कितना बढ़िया, हमारे सिटी में क्यों नहीं है, जयपुर में क्यों नहीं, पुणे में क्यों नहीं. क्योंकि देर इज़ प्रॉपर इंटीग्रेशन जो होना चाहिए और जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक दूसरे से, बिकॉज देश बहुत बड़ा है अपना, 140 करोड़ की आबादी, तो हमें इन सब चीज़ों की तरफ इस तरीके से देखने की ज़रूरत है. तो इसलिए आप सब लोगों का, हमारा सबका इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस से डायरेक्ट कनेक्शन है, ये आप सब लोग समझ लीजिए. ये मत कहिए कि यार ये पॉलिटिशियंस का हमारा क्या लेना देना है. इसका हमारे जीवन के ऊपर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट है, जिससे हम टैक्सेस पे करते हैं, सोसाइटी चलती है, पूरा गवर्नेंस. महाराष्ट्र का पूरा बजट कितना है पता है किसी को? 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ एनुअल बजट. महानगर पालिका है और कॉरपोरेशन और बाकी भी जितनी भी जिला परिषद है उनका बजट अलग. पूरे भारत का बजट कितना है पता है आपको? पूरे भारत में पुलिस कितने हैं पता है आपको? पूरे भारत में पूरा अपना गवर्नेंस कितने IAS अधिकारी यहाँ पे, अभी प्रोफेसर श्री दाड़े जी ने बोला कि मैं 25 साल पूरे विश्व में घूमा, तो ये पूरा गवर्नेंस पूरे इतने भारत का, तो इसलिए अपना मॉडल ही अमेरिका या किसी भी देश के कंपैरिजन में कंप्लीटली डिफरेंट मॉडल है अपने देश का. इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद भी एक कॉमन थ्रेड है. आंध्र प्रदेश में उगाड़ी बोलेंगे, हम यहाँ गुड़ी पाड़वा बोलेंगे, वहाँ पे छठ पूजा होगी, तो कॉमन थ्रेड है. इतना सुंदर धागा है, बट ये धागा हमें सब लोगों को कई बार कुछ डिफरेंसेस हमारे मन में फ्रैक्चरिंग हो जाता है और पॉलिटिकल इश्यूज जो सोसाइटी में हम देखते हैं उसका परिणाम कुछ डिसऑर्डर के रूप में हमारे सामने आता है और हम सब लोग इसके सफरर हैं. तो इसलिए नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ आप सब लोगों ने जब ये वॉलंटियरिज्म का काम करते हुए कैसे देखना चाहिए, ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ. है भाई, करना है कुछ तो सर्टिफिकेट मिलेगा. ये पूरे जीवन भर आप, ये इतिहास बनने जा रहा है कि एक प्राइवेट शिक्षण संस्था के द्वारा, MIT-WPU यूनिवर्सिटी, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा इतनी बड़ी एक ऐसी सोच कि पूरे भारत के सभी लॉ मेकर्स, और ये कोई 2-3-4 साल में ये कल्पना नहीं, 20 साल पहले जब स्कूल ऑफ गवर्नमेंट खुला तब से कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, अच्छे युवकों ने, टेक्नोक्रेट, प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट लोग. वी डू नॉट वांट टू गेट रूल्ड बाय गुन्स एंड बैड पीपल. वी सी मेनी अ टाइम्स कि भाई सोसाइटी में किस तरीके के रोल हम उनको भी चुन के देते हैं, वो भी राजनीति में आते हैं और फिर वो हमारे ऊपर रूल करते हैं. ये बदलना है. आपके जैसे प्रोफेशनल्स पब्लिक लाइफ में आने वाले समय में आने की ज़रूरत है. इसके लिए नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस, इसके लिए MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट. तो इसको आप सब लोग इस तरीके से देखिए. मैं बहुत देर तक बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फिर से आपके साथ बोलने का मुझे मौका मिलेगा. अलग अलग वॉलंटियर्स, अलग अलग कैटेगरीज का इसका सिलेक्शन, चयन आपके साथ 1-on-1 रूबरू. सो महेश थोरवे जी और सभी लोग यहाँ पे, हमारे मैडम डीन, तो इस तरीके से बच्चों को एक बार अंडरटेकिंग भी लीजिए कि मैं इसमें करूँगा, नहीं तो उस दौरान भाई मैं चला गया, मेरे पिताजी का या ऐसा, वी कांट अफोर्ड टू डू दैट. एक बार उन्होंने कमिट किया और बाकी एग्जाम्स के शेड्यूल्स और वो सब 2 महीने है, तो वो प्लानिंग आपके
टाइम टेबल्स और उनके बाकी भी जो रूरल इमर्शन प्रोग्राम, नेशनल स्टडी टूर प्रोग्राम्स, उसका भी आपने डिज़ाइन उस तरीके से आप कर रहे हैं। बट जो भी चुनिंदा बच्चे इसमें आगे आना चाहते, तो आप वॉलंटियर विद अ फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर दिस वेरी एफर्ट। इतना ही मेरा अपील है। जो लोग कि भाई सर मुझे नहीं जमेगा, थैंक यू, मेरा दूसरा कुछ है, एंड यू कैन हैव योर ओन प्रायोरिटीज, आई कैन अंडरस्टैंड। बट जो बच्चे आएंगे इसमें बहुत तन्मयता से, बिकॉज ये यूनाइटेड नेशंस तक वर्ल्ड में इसका मैसेज जाने वाला है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड उस सर्टिफिकेट के ऊपर डिप्लोमेसी में वर्ल्ड के कहीं पे भी इंस्टीट्यूशंस में आप कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये पहले भी अनुभव वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस में जो बच्चों ने काम किया उनको भी वो उसका लाभ हुआ है। तो इसका डायरेक्ट लाभ आपको है, ये आपको सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिस्टर सेतु, हमारे यहाँ पे मिस्टर सेतु, कैन यू स्टैंड अप फॉर अ मिनट? सो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू जस्ट एक्सप्रेस इन अ मिनट कि आइए ना, तो क्या अप्रोचेस सोशल मीडिया और बाकी सब चीज़ों के होने हैं। सो मे बी यू कैन टेक 2-3-4 minutes and express your mind. Thank you so much once again, and I really feel happy to see such a wonderful response. Thank you. Thank you, sir. I think all of you are blessed to have a leader like this to guide you, through specifically the age that you're going through. So I have a few questions for you. How many of you are aware that Apple is launching their new store in Mumbai? Awesome, fantastic. How many of you know that ChatGPT has data pocket centers in Hyderabad? Fantastic. Okay. There are more examples that I can continue with. Like National Australian Bank is switching off their China operations and bringing it to India. Now, these are the opportunities which each one of you have. And the reason why I'm sharing this with you is that each of these opportunities have two things in common. One, they need younger people. All of you are young. The second, they want people with more EQ. What is emotional quotient? Emotional quotient is basically work experience. Experience of working on a project like this. If Mr. Karat has described this project to you, EP sir has described this project to you, trust me, this project will do wonders to your CV. So just make sure that, anybody of you who would want to join a global name continues to consider this as a part of their very, very important volunteeringship. With that, I have one more question for you. How many of you spend time on Instagram? Unbelievable. Very few hands. Okay. Yes. Now I can see a lot of hands. This project is going to be promoted extensively on social media, extensively on PR. We are looking for volunteers. We are looking for all of you on how to make this very, very big. We've already started getting some fantastic traction. A lot of MLAs, a lot of MLCs have already started retweeting, have already started sharing our posts. Imagine something that you're working on is going to 2.53 million people. One post reaching out to 3 million people. That's the potential of basically people on social media. And I'd request every one of you to join hands. Yeah. And that's one more important, very valid input. There is a NLC Bharat website. I would request each one of you to go through the website, go through the social media handles, follow them, because this is where we need volunteers, this is where we need show of strength. So I would request all of you to be a part of this revolution so that your gateways to an Apple, to a ChatGPT or any such global openings, once you graduate from here, is open. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. As we come to an end to this NLC meeting, I, Tanvi Raut, Student President of MIT-WPU, on behalf of the Student Council, would like to thank all the dignitaries, right from Rahul Karat sir, Milind Pandey sir, Sunil Dhare sir, Setu Saha sir, Ganesh Pokle sir, Mridula ma'am, Thorve sir, Sanjay Upadhyay sir, Vice Chancellor sir, RM Chitnis sir, Purnima Inamdar ma'am, Sanjay Upadhyay sir, academic leaders, faculties, and my dear friends, you. Thank you for being a part of this NLC meet and showing your interest towards NLC. I hope you'll stay connected with us throughout the event until the NLC is successful. Thank you for being a part today and showing your valuable contribution. Thank you for addressing us as dignitaries.
As we come to an end, I would like to request all the students and all the people in the hall to rise up for the national anthem. I request everybody to be seated. Let the guests leave and then y'all can vacate. But please be seated. There is an announcement to be made after this. Please be seated. Very good. Students,